Hello everyone, welcome back to my channel. So today I am going to discuss one of the most important system of human physiology, that is the digestive system. So digestive system की अगर हम बात करें तो digestive system contributes to homeostasis by breaking down food into forms that can be absorbed and used by body cells. So digestive system क्या करता है, homeostasis contribute करता है. कैसे? By breaking down food into forms that can be absorbed and used by body cells. Means डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उन सारे फूड को ब्रेक डाउन करता है. किस फॉर्म में? उस फॉर्म में जिसके द्वारा जिस फॉर्म में बॉडी एब्जॉर्ब कर सकता है और बॉडी सेल्स यूज कर सकता है. फूड के अलावा digestive system also absorbs water, vitamins, minerals, and it eliminates waste from the body. So the food we eat contains a variety of nutrients which are used for building new body tissues and repairing damaged tissue. So जो हम खाना खाते हैं उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और वो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स का यूज क्या होता है, वो वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी टिश्यू को, नए बॉडी टिश्यू को बिल्डिंग करने के लिए यूज होता है और डैमेज टिश्यू को रिपेयर करने के लिए यूज होता है. सो फूड इज ऑल्सो वाइटल टू लाइफ बिकॉज इट इज आवर ओनली सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी. फूड हमारे लाइफ के लिए वाइटल है. क्यों? क्योंकि फूड इज द ओनली सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी. However, most of the food we eat consist of molecules that are too large to be used by body cells. लेकिन जो हम भोजन खाते हैं, जो हम फूड खाते हैं, उसमें मॉलिक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं जो कि बॉडी सेल्स के द्वारा डायरेक्टली यूज करना पॉसिबल नहीं होता है. इसीलिए देयरफॉर फूड्स मस्ट बी ब्रोकन डाउन इनटू मॉलिक्यूल्स दैट आर स्मॉल इनफ टू इंटर बॉडी सेल्स फॉर देयर यूज. इसीलिए वो फूड को बहुत ही स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करने होते हैं ताकि वो बॉडी सेल्स में यूज करने के लिए आसानी से इंटर कर सके. एंड दिस इज अकम्प्लिश्ड बाय डाइजेस्टिव सिस्टम. और ये कैसे परफॉर्म होता है? ये परफॉर्म होता है डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा, which forms an extensive surface area in contact with the external environment and in closely associated with the cardiovascular system. And the combination of extensive environmental exposure and close association with blood pressure is essential for processing the food that we eat. सो ओवरव्यू ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, सो डाइजेस्टिव दो वर्ड से बना हुआ है, डिस प्लस जेनरे. डिस मतलब क्या होता है? अपार्ट. जेनरे मतलब क्या होता है? टू कैरी. सो डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स दैट ब्रेक डाउन द फूड वी ईट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स दैट कैन बी यूज्ड बाय बॉडी सेल्स. सो डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं जो कंबाइंडली फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, जो हम फूड खाते हैं और उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में बॉडी सेल से यूज कर सकता है. Two groups of organs composed of digestive system. Digestive system में दो तरह के organs होते हैं. First one is the gastrointestinal tract and second one is the accessory digestive organ. Gastrointestinal tract and digestive organ. So gastrointestinal tract की अगर हम बात करें, जिसे GI tract भी बोलते हैं या alimentary canal भी बोलते हैं. Alimentary मतलब क्या होता है? Nourishment is a continuous tube that extends from the mouth to anus through the thoracic and abdominopelvic cavities. So gastrointestinal tract क्या है? gastrointestinal tract continuous tube है जो mouth से anus तक extend करता है through thoracic and abdominopelvic cavities. Organs of gastrointestinal tract include mouth, most of the pharynx,
esophagus, stomach, small intestine and large intestine. लेंथ ऑफ जीआई ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो ये 5 से 7 मीटर होता है। अगर इसको फीट में कन्वर्ट करें तो 16.5 to 23 फीट होता है इन लिविंग पर्सन व्हेन द मसल्स अलोंग द वॉल ऑफ जीआई ट्रैक्ट ऑर्गन्स आर इन स्टेट ऑफ टोनस दैट इज सस्टेन्ड कॉन्ट्रैक्शन। वहीं पे एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन की अगर हम बात करें तो एसेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में क्या आते हैं, टीथ आते हैं, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैंक्रियाज। टीथ की अगर हम बात करें तो दे एड इन फिजिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड एंड टंग की अगर हम बात करें तो ये च्यूइंग एंड swallowing ऑफ फूड में असिस्ट करता है। The other accessory digestive organs, however, never come in direct contact with food. They produce stored secretions that flow into GI tract through guts. The secretions add in the chemical breakdown of food. So teeth and tongue are involved in physical breakdown of food. वहीं पे salivary gland, liver, gallbladder, pancreas ये सारे chemical breakdown of food में involve होते हैं। The GI tract contains food from time to it eaten until it is digested and absorbed or eliminated. Muscular contractions in the wall of GI tract physically break down the food by churning it and propel the food along the tract from the esophagus to the anus. The contractions also help to dissolve foods by mixing them with fluid secreted into the tract. Contraction की वजह से क्या होता है, फूड को डिसॉल्व करते हैं by mixing them with fluid secreted into the tract. Enzymes secreted by accessory digestive organs and cells that line the tract break down the food chemically. So accessory digestive organs के द्वारा जो एंजाइम सिक्रीट होता है एंड सेल वैसे सेल्स जो कि जीआई ट्रैक्ट को लाइन करते हैं उनके द्वारा जो एंजाइम सिक्रीट होता है वो सारे के सारे फूड को केमिकल ब्रेक डाउन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम परफॉर्म 6 बेसिक फंक्शन। सो ओवरऑल अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की फंक्शन की बात करें तो टोटल 6 फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट वन इज द ingestion, second one is the secretion, third one is the motility, fourth one is the digestion, fifth one is the absorption and sixth one is the defecation. So ingestion क्या होता है, ingestion is the process involves taking food and fluids into the mouth. जिस प्रोसेस के द्वारा हम फूड और लिक्विड माउथ में लेते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। नाउ सिक्रीशन, एवरीडे सेल्स विद इन द वॉल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड accessory digestive organs secrete a total of about 7 liters of water, acid, buffer and enzymes into the lumen of the tract. एवरी डे मतलब डेली जो जीआई ट्रैक्ट के बॉल पे जो सेल्स होते हैं एंड एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन जो होते हैं ये दोनों मिलके टोटल 7 लीटर वाटर, एसिड, बफर, एंजाइम का सिक्रीशन करते हैं इनटू द ल्यूमेन ऑफ द ट्रैक्ट। द थर्ड फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम विल बी मोटिलिटी। सो मोटिलिटी क्या होता है, अल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स इन द वॉल्स ऑफ जीआई ट्रैक्ट मेक्स फूड एंड secretions and move them towards the anus. This capability of GI tract to mix and move material along its length is called motility. Next one is the digestion. Digestion is what? Digestion is the process of breaking down ingested food into small molecules that can be used by body cells. In mechanical digestion, teeth cut and grind food before it is swallowed and then smooth muscles of the stomach and small intestine churns the food further assist the process. As a result क्या होता है, food molecules become dissolved and thoroughly mixed with the digestive enzyme. दूसरा केमिकल डाइजेशन। सो दो तरह के डाइजेशन होते हैं, मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में क्या होगा, लार्ज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स इन फूड आर स्प्लिट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलिसिस एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस्ड बाय सैलिवरी ग्लैंड्स, टंग, स्टमक, पैंक्रियाज एंड स्मॉल इंटेस्टाइन कैटालाइज दीज कैटाबोलिक रिएक्शंस।
After digestion, the next function of digestive system is absorption. Absorption क्या होता है? It is the movement of products of digestion from the lumen of GI tract into blood or lymph is called absorption. Absorption क्या है? जो digestion का product है वो lumen of GI tract से कहाँ move करता है? Blood और lymph में, उस process को बोलते हैं absorption. So once absorbed, these substances circulate to cells throughout the body, and a few substances in food can be absorbed without undergoing digestion, and these include vitamins, ions, cholesterol and water. Next step is defecation. Defecation is what? It is the waste indigestible substance, bacteria, cells, lot from the lining of GI tract and digested materials that were not absorbed in their journey through the digestive tract leave the body through the anus in the process called defecation. So eliminated material जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं feces और stool. So these are the 6 function of digestive system. First one is the ingestion, second one is the secretion, third one is the motility, fourth one is the digestion, fifth one is the absorption, and sixth one is the defecation. Ingestion is what? Taking food into mouth. Secretion is what? Release of water, acid, buffers and enzymes into lumen of GI tract. Third one is the mixing or propulsion. Mixing or propulsion is what? It is the churning and movement of food through GI tract. Next one is the digestion. Digestion is mechanical and chemical breakdown of food. Fifth one is the absorption. Absorption is the passage of digested products from GI tract into blood and lymph. And sixth one is the defecation. Defecation is what? Elimination of feces from GI tract. So now the next topic will be the layers of gastrointestinal tract. Gastrointestinal tract में कितने layers present होते हैं? Structure and function of the layers that form the wall of gastrointestinal tract. The wall of GI tract from the lower esophagus to the anal canal has the same basic 4-layered arrangement of tissue. So lower esophagus से लेके anal canal तक same 4-layered arrangement of tissue होते हैं, and the 4-layer of tract from deep to superficial are mucosa, submucosa, muscularis and then serosa. सेरोसा को एडवेंटिटिया भी बोलते हैं. सो टोटल कितने लेयर हुए हैं? लोअर इसोफेगस से अगर हम टोटल 4 लेयर होते हैं जीआई ट्रैक्ट में. जो इनर मोस्ट लेयर होता है दैट इज म्यूकोसा. म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा, सब म्यूकोसा के बाद मस्कुलरिस एंड देन सेरोसा. सो टोटल 4 लेयर होते हैं जीआई ट्रैक्ट में. म्यूकोसा इज द इनर लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट एंड इट इज ए म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकोसा क्या है? म्यूकोसा इज द इनर लाइनिंग ऑफ जीआई ट्रैक्ट. दिस इज द म्यूकोसा जो कि इनर लाइनिंग है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का. म्यूकोसा की अगर हम बात करें तो म्यूकोसा में टोटल 3 लेयर होते हैं. फर्स्ट वन इज द लेयर ऑफ इपिथेलियम जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट होता है विद द कंटेंट्स ऑफ द जीआई ट्रैक्ट. सेकेंड लेयर इपिथेलियम के बाद एक लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको लैमिना प्रोपोरिया कहते हैं, एंड देन ए थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल होता है जिसको मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलते हैं. सो म्यूकोसा में टोटल 3 लेयर होते हैं. जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है इपिथेलियम, देन लैमिना प्रोपोरिया जो कि कनेक्टिव टिश्यू होता है, देन थर्ड जो मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलते हैं जो कि स्मूथ मसल होते हैं. इपिथेलियम इन द माउथ, pharynx, esophagus, anal canal is mainly non-keratinized stratified squamous epithelium that serves a protective function. Simple columnar epithelium which functions in secretion and absorption lines the stomach and intestine. Tight junctions that firmly seal neighboring simple columnar epithelial cells to one another restrict the leakage between the cells. The rate of renewal of GI tract epithelial cells is rapid. Every 5 to 7 days slow off and they are replaced by new cells. Means every 5 to 7 days में वो slow off होते हैं और वो नए cells से replace होते हैं. So locating among the epithelial cells are exocrine cells that secrete mucus and fluid to the lumen of the tract.
and several types of endocrine cells collectively called enteroendocrine cells which secrete hormones. So this is all about epithelial layer of mucosa. सेकेंड लेयर जो होता है लैमिना प्रोपोरिया, लैमिना मतलब होता है थीन, फ्लैट प्लेट और प्रोपोरिया मीन्स होता है वंस ऑन। लैमिना प्रोपोरिया की अगर हम बात करें तो ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होते हैं कंटेनिंग मेनी ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल। लैमिना प्रोपोरिया क्या है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बहुत सारे ब्लड एंड लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं which are the routes by which nutrients absorbed into the GI tract reach the other tissue of the body, and this layer supports the epithelium and binds it to the muscularis mucosa. The lamina propria also contains majority of the cells of mucosa associated lymphatic tissue जिसको माल्ट भी बोलते हैं. These prominent lymphatic nodules contain immune system cells that protect against disease. Malt is present in all along the GI tract, especially in the tonsil, small intestine, appendix and large intestine. नाउ जो थर्ड लेयर है दैट इज ए थिन लेयर ऑफ स्मूथ मसल फाइबर जिसको मस्कुलरिस म्यूकोसा बोलते हैं. थ्रोस द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इनटू मेनी स्मॉल फोल्ड्स व्हिच increase the surface area for digestion absorption. Movements of muscularis mucosa की बात करें तो they ensure all the absorptive cells are fully exposed to the contents of GI tract. Next layer is submucosa. Submucosa की अगर हम बात करें तो they consist of areolar connective tissue that binds the mucosa to muscularis. सब म्यूकोसा क्या है? सब म्यूकोसा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है और ये क्या करता है? ये म्यूकोसा को मस्कुलरिस से बाइंड करता है. It contains many blood and lymphatic vessels that receive absorbed food molecules. Also located in the submucosa is an extensive network of neurons known as submucosal plexus. मीन्स सब म्यूकोसा में एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं और उस एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं? सब म्यूकोशन plexus. The submucosa may also contain glands and lymphatic tissue. Next one is muscularis. Muscularis of mouth, pharynx and superior and middle parts of the esophagus contains skeletal muscle that produces voluntary swallowing. Skeletal muscle also forms the external anal sphincter which permits voluntary control of defecation, and throughout the rest of the tract the muscularis consists of smooth muscles that is generally found in two sheets, an inner sheet of circular fibers and an outer sheet of longitudinal fibers. अंदर में circular fiber होते हैं, बाहर में longitudinal fibers होते हैं. Involuntary contractions of a smooth muscle helps break down food, mix it with digestive secretions and propel it along the tract. Between the layers of muscularis is a second plexus of neuron जिसको myenteric plexus भी बोलते हैं. Third one, next layer is serosa. Those portions of GI tract that are suspended in the abdominal cavity have a superficial layer जिसको serosa बोलते हैं. Superficial layer को क्या बोलते हैं? Serosa. As its name implies, the serosa is a serous membrane composed of areolar connective tissue and simple squamous epithelium जिसको mesothelium बोलते हैं. The serosa is also called visceral peritoneum. Serosa को क्या बोलते हैं? Visceral peritoneum. क्यों? Because it forms a portion of the peritoneum which we examine in detail shortly. The esophagus lacks a serosa. Instead, only a single layer of areolar connective tissue called adventitia forms a superficial layer of this region. Next topic is the neural innervation of GI tract. Neural innervation of GI tract is basically nerve supply of the GI tract. Gastrointestinal tract is regulated by an intrinsic set of nerves known as enteric nervous system and by extrinsic set of nerves that are part of autonomic nervous system. Means intestinal में GI tract में gastrointestinal tract में intrinsic sets of nerves होते हैं जिसको enteric nervous system बोलते हैं और दूसरा extrinsic set of nerves होते हैं जो कि autonomous nervous system का part होता है. Enteric nervous system क्या होता है? It consists of about 100 million neurons.
इंटेरिक नर्वस सिस्टम में 100 मिलियंस न्यूरॉन से बने होते हैं दैट एक्सटेंड फ्रॉम द ईसोफेगस टू द एनस, मींस ये ईसोफेगस से एनस तक होता है। न्यूरॉन्स ऑफ इंटेरिक नर्वस सिस्टम जो होते हैं वो दो प्लेक्सस में अरेंज्ड होते हैं। फर्स्ट वन इज द माइंट्रिक प्लेक्सस, सेकंड वन इज द सबम्यूकोशल प्लेक्सस। माइंट्रिक प्लेक्सस की अगर हम बात करें तो मायो मतलब होता है मसल्स, प्लेक्सस ऑफ आयरवैक इज लोकेटेड बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर ऑफ मस्कुलरिस। माइंट्रिक प्लेक्सस कहाँ होता है? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल के बीच में। एंड सबम्यूकोशल प्लेक्सस कहाँ होता है? सबम्यूकोशल प्लेक्सस जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है ये सब म्यूकोशा के अंदर होता है। सो दो तरह के प्लेक्सस होते हैं, माइंट्रिक प्लेक्सस एंड सबम्यूकोशल प्लेक्सस। माइंट्रिक प्लेक्सस को प्लेक्सस ऑफ आयरवैक भी बोलते हैं, सबम्यूकोशल प्लेक्सस को प्लेक्सस ऑफ मिशनर भी बोलते हैं। सो माइंट्रिक प्लेक्सस को क्या बोलते हैं? प्लेक्सस ऑफ आयरवैक, एंड सबम्यूकोशल प्लेक्सस को प्लेक्सस ऑफ मिशनर भी बोलते हैं। द प्लेक्सस ऑफ ईएनएस consist of motor neurons, interneurons and sensory neurons. Motor neurons, interneurons and sensory neurons होते हैं because motor neurons of the menintic plexus supply the longitudinal and circular smooth muscle layer of the muscularis. This plexus mostly control GI tract motility, particularly the frequency and strength of contraction of muscularis. So motor neuron जो होता है menintic plexus का जो motor neuron होता है ये सप्लाई करता है क्या? लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर स्मूथ मसल लेयर ऑफ मस्कुलरिस, एंड दिस प्लेक्सस मोस्टली कंट्रोल्स जीआई ट्रैक्ट मोटिलिटी, particularly the frequency and strength of contraction of the muscularis. The motor neurons of the submucosal plexus supply the secretory cells of the mucosal epithelium, controlling the secretions of the organs of GI tract. The interneurons of ENS interconnect the neurons of the menintic and submucosal plexus. The sensory neurons of the ENS supply the mucosal epithelium and contain receptors that detect stimuli in the lumen of GI tract. So the wall of GI tract contains two major types of sensory receptors. First one is the chemoreceptor and second one is the mechanoreceptor. Chemoreceptor which respond to certain chemicals in the food present in the lumen. Mechanoreceptors such as the stress receptors that are activated when food distends or stretches the wall of GI organ. Next one is the autonomic nervous system. Although the neurons of the ENS can function independently, they are subject to regulation by neurons of the autonomic nervous system. Vagus nerve supply parasympathetic fibers to most parts of the GI tract, with the exception of the last half of the large intestine, which is supplied with parasympathetic fibers from the sacral spinal cord. The parasympathetic nerves की बात करें तो ये सप्लाई करता है GI tract from neural connection with the ENS. Parasympathetic preganglionic neurons of the vagus or pelvic splanchnic nerve synapse with parasympathetic postganglionic neurons located in the menintic and submucosal plexus, and some of the parasympathetic postganglionic neurons in turn synapse with neurons of in the ENS. Others directly innervate smooth muscles and glands within the wall of GI tract. In general अगर बोलें तो stimulation of the parasympathetic nerves that innervate the GI tract causes the increase in GI secretion and motility by increasing the activity of ENS neurons. Sympathetic nerves that supply GI tract arise from the thoracic and upper lumbar region of the spinal cord. Like parasympathetic nerves, these sympathetic nerves form neural connections with the ENS. Sympathetic postganglionic neurons synapse with the neurons located in the menintic plexus and submucosal plexus. In general, sympathetic nerves that supply the GI tract cause the decrease in GI secretions and motility by inhibiting the neurons of the ENS. Emotions such as anger, fear and anxiety may slow digestion because they stimulate the sympathetic nerves that supply the GI tract. So this is all about today's lecture. In our next lecture we will discuss about other organs of the digestive system, that is a mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine as well as digestive glands.